Bismillahirrahmanirrahim. We started talking about initial value problems. Uh, from the study of differential equations, you know that an initial value problem involves a differential equation. If it is first order differential equation, then you are given an initial condition where for some particular value of x, you are given a value of y. Analytical solution of such an initial value problem is a curve in xy plane that represents the graph of the function y is equal to function of x plus some arbitrary constant that passes through the point x naught y naught. So, for example, if you are given a differential equation of this type, which is variable separable, so after separating the variables, we have this form which is directly integrable. And when you integrate, you get this solution with an arbitrary constant. If we are given an initial condition that x is equal to 1, y gives 3, then substituting x is equal to 1 and y is equal to 3 in this equation, c is obtained to be minus 3. And replacing c by minus 3, we get the particular solution. And this can be graphed on xy plane. On the other hand, a numerical method that can be used to obtain an approximate solution of such an initial value problem produces a solution that begins at x naught, y naught. That means the initial point given in the initial value problem. The points on the approximate solution curve are generated by numerical method. They in general do not match the actual solution curves obtained by some analytical method, but can be made as close as possible uh, like any other method that we have considered for solving any other problem. So let us visit analytical method for another problem, just to remind you what we used to do to solve an initial value problem. This differential equation, which is also variable separable, and we have an initial condition y at 0 is equal to 1. That means that at x is equal to 0, y will be 1. First, we obtain the general solution. Whatever method is applicable to the given differential equation, here it is again variable separable. After separating the variables, you can integrate so that you get this as a general solution. This left part integrated becomes log of 1 plus y, whereas the integral of x squared is x cubed by 3, and the integration constant, whenever you had in the solution of a differential equation a logarithmic function, you usually put the integration constant in the log form also. C, which is generally an arbitrary constant or integration constant, that is required to be determined to get the particular solution. The initial condition given tells us that for x is equal to 0, y is equal to 1. So substituting this x is equal to 0 and y is equal to 1 in the given solution, we come to know that log of 2 is equal to 0 plus log of c, and that gives you c is equal to 2. Then you substitute c is equal to 2 in the given differential equation, and given in the general solution obtained. So we have this particular solution, and this particular solution can be written in this form. I hope you understand that when log is removed, first take log 2 on this side, then it becomes 1 plus y upon 2. So log of 1 plus y upon 2 में से log separate करेंगे तो
1 plus 5 upon 2 is equal to e raised to power x cubed by 3. And then 1 plus 5 upon 2 में से 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ और 1 इधर आके -1 हो गया. And this is the particular solution obtained for a given initial value problem using our analytical method. This is what we used to do in a study of differential equation. Before we proceed further, let us pay a visit to a method known as Taylor series method. As one way or the other, the Taylor series of a function is indeed involved in development of any or many approximate numerical methods. For example, the equation for this equation, we can produce an analytical solution, and which is this. You can go through how to solve this, which is a linear equation. And for a linear equation, you have a method that involves finding out particular integral, integrating factor के जरिए. I have directly written down the solution here, the general solution. And using the initial condition, x is equal to 0, y is equal to -1, the value of C obtained is 3, and the particular solution is this. Now, this particular solution can be put into Taylor series form. I'm not still considering what is Taylor series method. Just this particular solution obtained through analytical method. Let us use an expansion of e power x or e power minus x. E power x expansion is known to be this. E power x is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial. So e power minus x has the expansion 1 minus x plus x square upon 2 factorial minus x cube upon 3 factorial. अगर ये expansion e power minus x का हम इस particular solution में रख दें, so we will and then simplify for terms. We will have this solution. Now, this is not Taylor series method, but this is an differential equation solved using analytical method using the initial condition. We just demonstrated that इसके अंदर भी हम Taylor series expansion e power minus x का रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक Taylor series solution मिलेगा इस given initial value problem का. So whenever we get a particular solution for any initial value problem, if we involve this particular solution involve a function of type sine, cosine, e power x, जिनके expansions, infinite expansions हमें available हैं, तो वो substitute करके हम अपने particular solution को expansion form में लिख सकते हैं. Now let us see how Taylor series solution is developed. We recall that for any function y is equal to fx, or y depending on x can be extended into a Taylor series like this: y at x naught plus x minus x naught into y prime at x naught plus 1 upon 2 factorial x minus x naught square into second derivative at x naught, blah, blah, blah. If all order derivatives of the given function are available, that means they exist at x naught, x is equal to x naught, we write down Taylor series. But if the derivatives are available at x is equal to 0, so x naught is replaced by 0, and what we get is the Maclaurin's expansion. I'll be using this Maclaurin's expansion to develop a Taylor series solution for this problem. Y prime is equal to minus 2x minus 1. Now, this again is a differential equation which is classified as a linear equation, जिसमें particular integral निकालना होता है, but we are not going into the
development of analytical solution. Rather, we just consider the initial condition and start developing this expansion using the value of y at 0, using the derivative value of y at 0, using then second derivative of y at 0, and so on. So first of all, we look at what happens at x is equal to 0. At x is equal to 0, y is given to be minus 1. So y0 is minus 1. Then y prime in the problem is given to be minus 2x minus 1. So what's the value of x we have available? 0, y is equal to minus 1. अगर हम x equal to 0, y is equal to minus 1 इसके अंदर रख दें तो y prime at 0 की value 1 आ जाती है. Then we take the derivative of y prime minus, which is minus 2x minus y. हम derivative function का लेंगे, इस constant का नहीं लेंगे. So we take the derivative of minus 2x minus y and we get second derivative of y as minus 2 minus y prime. और इसके अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है हमें, अब इस सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर ना x है ना y है बल्कि y प्राइम है. So at x is equal to 0, y prime की value is already there, 1. So we substitute y prime at 1, at 0 is equal to 1. So minus 2 minus 1 becomes minus 3. So second derivative value at 0 is obtained. Next step is to go find out third derivative. So पहले हम second derivative as a function जो minus 2 minus y prime है इसका derivative लेंगे तो third derivative of y is made available. इसका derivative 0 minus y prime का derivative minus y double prime. Now अब third derivative के अंदर ना x है ना y है बल्कि y double prime है. And we have obtained the value of y double prime at 0, which is minus 3. तो इसके अंदर y double prime की जगह अगर हम minus 3 रख दें तो we obtain the derivative value, third derivative value at x equal to 3 to be 3 minus यहाँ का और y double prime की value minus 3, that becomes. Similarly, y fourth derivative will be minus 3 and so on and so forth. You can write down as many, क्योंकि इसका derivative, third derivative को जब तुम differentiate करोगे तो तुम्हें fourth derivative मिलेगा which will be equal to minus y triple prime. So minus 3 हो जाएगा. Fifth derivative निकालोगे minus y fourth derivative आ जाएगा. इस तरह सारे derivative निकल आएंगे. Now y at 0 is minus 1. X times y prime at 0 is 1. So x into 1. Then x 1 upon 2 factorial into x square into y double prime at 0. So y double prime at 0 is minus 3. So यहाँ पे minus 3 रखेंगे तो this becomes minus 3 by 2 factorial. Next term involves third derivative. We have already obtained a third derivative at 0. So यहाँ पे third derivative at 0 रखेंगे minus 3 and so on. सारे हम derivative values जो निकाल रहे हैं वो इस expansion में रखते चले जाएं तो we get this solution. Now this is a Taylor series solution because we have not used any analytical method, just from the differential equation. We knew what is y at 0. And we then calculated the derivatives of from the given differential equation, first derivative, second derivative, third derivative, और इन तमाम derivatives में x is equal to 0 और y is equal to minus 1 इस्तेमाल करते हुए हमने first derivative की value, second derivative की value, third derivative की value, fourth derivative. This problem was relatively simple के derivative लेते वक्त x और y बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हर नया derivative जो है वो पिछले derivative से related है very simply. And the solution can be written very simply. Now, back to the analytical solution. इस differential equation को analytically solve करें, जो कि linear differential equation है, तो हम particular solution निकालेंगे. तो वो particular solution ये आएगा जो मैंने पहले दिखाया था, जिसमें अगर हम e power minus x का expansion रखते तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमने टेलर सीरीज मेथड से डिटरमाइन किया. Another problem
और हम इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे using Taylor series method up to only fourth degree for the initial value problem this, where dy by dx is x square plus xy and initial condition given to be x is equal to 1, y is equal to 2. सबसे पहले हम टेलर सीरीज अप टू फोर्थ डिग्री लिख लें, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव. ये फोर्थ डिग्री टेलर एक्सपेंशन हो गया. चूंकि x नॉट 1 है लिहाजा x नॉट की जगह 1 रख दिया. So everywhere x naught is replaced by 1. Also derivatives are we have to evaluate at 1. All derivatives we have to evaluate at 1, and then start using all this information to obtain the values of the derivative. Let us see step by step. At x is equal to y naught, x is equal to x naught, which is 1, y की वैल्यू हमें 2 दी हुई है. तो इसका मतलब है I can write down y at 1 is equal to 2, that I will use here. Then look at the derivative, जो differential equation में दिया हुआ था x square plus xy. So x is equal to 1 और y is equal to 2 इसके अंदर रखें, तो डेरिवेटिव एट x1 आ जाएगा, यानी y prime at x1, x is equal to 1, so 1 is squared, x into y, 1 into 2, and we get y prime at 1 is equal to 3, जो कि हम यहाँ इस जगह इस्तेमाल करेंगे. So y prime at 1 is equal to 3 ऑब्टेन हो गया. अब dy by dx जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट 2x प्लस xy इन पर हम u into v रूल लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, y as it is प्लस x as it is, y का डेरिवेटिव. And now this is y double prime. At x is equal to 1, y was given to be 2, and y prime has been obtained as 3. So ये सारी values रखते हैं इसके अंदर. तो y double prime at 1 की value 7 आ जाती है. That we will use here. After obtaining second derivative at 1, which is equal to 7, we go for this third derivative. The second derivative is this 2x plus y plus xy prime. इसका derivative लेंगे तो 2x का derivative 2, y का derivative y prime, x into y prime का derivative फिर u into v के रूल से लेंगे तो x का derivative 1, y as y prime as it is, x as it is, y prime का derivative. Now we have available y prime at 1. We have available x is equal to 1 and y double prime at 1 is equal to 7. ये सारी values put की तो third derivative की value निकल के आई 15. Once the third derivative is obtained, third derivative का अगला derivative यानी fourth derivative लिया तो that comes out to be 2 constant है, 0 हो गया. y prime यहाँ पे 2 दफा आया था, 2y prime का डेरिवेटिव y डबल प्राइम और x into y डबल प्राइम का डेरिवेटिव फिर u into v से लेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, यानी y डबल प्राइम plus x into y triple prime. Now for writing down the value of fourth derivative at 1, हमारे पास second derivative at 1 available है, x is equal to 1 है और y triple prime is available as 15. ये सारी values रखी तो y triple fourth derivative at 1 comes out to be 36. हमसे यहीं तक कहा गया था काम, तो हम अब इस x में जितने डेरिवेटिव वैल्यूज अभी हमने निकाली हैं वो रख देते हैं. So we get in place of y1, y at 1, 2, y prime at 1, yani 3, then y double prime at 1, 7, y triple prime at 1, 15, y fourth y fourth derivative value was 36. तो ये सब substitute करके simplify करके we have obtained this as a Taylor series solution for the given differential equation. So just a review,
हम जब टेलर सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे, डायरेक्टली टेलर सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे, हम इन्फिनिट एक्सपेंशन आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन जो भी इस्तेमाल करना हो, यानी हमें इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू 0 पे दी हुई है तो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 पे दी हुई है तो टेलर एक्सपेंशन हो जाएगा, लाइक दिस प्रॉब्लम। हम थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, हद से हद भी फिफ्थ डिग्री सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, एंड दैट विल बी डेफिनेटली एन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एग्जैक्ट सोल्यूशन मैचिंग जो है वो सिर्फ उसी वक्त होती है जब इन्फिनिट एक्सपेंशन रखा जाए। सो इन्फिनिट एक्सपेंशंस हम जब डायरेक्टली किसी ऐसी प्रॉब्लम को जिसका हमें एनालिटिकल सोल्यूशन नहीं मालूम, जब उसके लिए हम टेलर सीरीज मेथड इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम फाइनाइट टेलर सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं, जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल। सो one more example for demonstrating a particular thing. ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इन्वॉल्व साइन एंड कोसाइन, और मुझे इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 दी हुई है। ये डिफरेंशियल ऐसी फॉर्म इक्वेशन ऐसी फॉर्म में है जिसमें हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी हमें एनालिटिकल मेथड में किसी का खास मेथड जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना। I have taken this simple problem to demonstrate an interesting thing. जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये dy बाई डी से इंटीग्रेट करके y हासिल होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल, कोसाइन का इंटीग्रल एंड एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, and we see that cos 0 1 होता है तो -1 is equal to -1 plus c, this means c is equal to 0 आ जाएगा, and the particular solution, this is the general solution, इसमें c की वैल्यू 0 रखेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ये आ गया। नाउ मैं टेलर सीरीज सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे? I need the value of y at x is equal to 0, which is always given in initial condition. Then I take the derivatives of the given function. Y prime का डेरिवेटिव ये, y डबल यानी y का डेरिवेटिव ये y प्राइम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, उसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, देन फोर्थ डेरिवेटिव, देन फिफ्थ डेरिवेटिव। तो जहां तक भी आपने निकालना है वहां तक आप डेरिवेटिव्स निकालिए। Then in derivative की values at x is starting values of x is equal to 0 पे y prime की वैल्यू 1 आ गई, x is equal to 0 पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 1 आई, x is equal to 0 पे थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फिर 1 आई, एंड फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आई, फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल लें। एंड देन सिंस मैंने फोर्थ डेरिवेटिव तक काम किया है, लिहाजा मैं मैक्लॉरिन एक्सपेंशन लिख रहा हूँ अप टू फोर्थ डिग्री, और उसके बाद ये सारी y और y प्राइम की जो वैल्यूज y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम, फोर्थ डेरिवेटिव, ये सारी की सारी हमने इस एक्सपेंशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम कहते हैं कि ये टेलर सीरीज सॉल्यूशन आ गया। नाउ लुक एट दिस इज टेलर सीरीज सॉल्यूशन एंड दिस इज एनालिटिकल सॉल्यूशन जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिखा था। Apparently these two solutions appear to be very different. लेकिन एक बात तो ये है कि अगर आप साइन और कोसाइन के एक्सपेंशंस लिख के उनमें 4 डिग्री टर्म तक कलेक्ट करके इस सॉल्यूशन को रीराइट करें तो दिस सॉल्यूशन विल बी सिमिलर टू दिस सॉल्यूशन। एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा ये करके देखना पड़ेगा, मैं नहीं करके देख रहा, आप लोग करके देख लें। साइन का एक्सपेंशन क्या होता है किताब में से तलाश करके देख लीजिएगा, नेट से तलाश करके देख लीजिएगा, कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है, और फिर इन सब में से 4 डिग्री टर्म्स तक जितनी आ रही हैं उन सबको ऐड करके देख लें और देखें कि ये इस एग्जैक्टली यही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ बनाऊं, वन which is the solution of the given initial value problem obtained using Taylor series method, the other solution which is the exact solution or the analytical solution, इनका ग्राफ for example 0 से 1 तक बना के देखें तो you will find that the two graphs are almost identical.
और मेरा ख्याल है कि मैंने ये ग्राफ आपको लास्ट टाइम बना के दिखाया था एक्सेल शीट पे, और अगर आप चाहें तो मैं इसको दोबारा इस वक्त बना के दिखाऊं। यस सर, दिखा। ओके, सो मैं फंक्शन इवैल्यूएशन के लिए यहाँ से ये रिजल्ट कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल शीट पर। कैन यू सी द एक्सेल शीट? Yes. Okay, and now we first produce the solution of a graph of this function that was obtained from Taylor series method. 0 से लेके f7, sorry, f6 plus 0.1, x is equal to 0 से लेके x is equal to 1 तक हम इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसकी वैल्यूज इज इक्वल टू -1 plus x, that comes from f6, plus we have x square, so I can write down, how do I write down x square? f ब्रैकेट में रख के करते हैं, f6 raised to power 2, ये x square कैलकुलेट हो गया, divided by 2 factorial or simply divided by 2, plus x cube comes from f6 raised to power 3, ब्रैकेट में रखा, divided by 3 factorial or 6, plus x raised to power, oh, is it plus or minus? It's minus. f6 raised to power 4 divided by 4 factorial, which is what? 24. ये फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट हो गई। हमें जो इनिशियल कंडीशन दी गई थी x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1 दिया हुआ था। ये पूरा सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो गया टेलर सीरीज के जरिए। एंड लेट अस मेक द ग्राफ ऑफ दिस। Here we have got the graph. Now, the exact solution was this. I'm copying from the worksheet. This was the exact solution. So I copy this table of function values and we'll change later on. Now the function is x cube upon 3. So I rewrite is equal to x cube, x coming from what? X is coming from cell number F23. F23 raised to power 3 divided by 3. I'm following this formula. Minus cos of x, which is F23, plus, do I have plus? Yes, plus sine of F23. So we have the same initial value, and then I copy this formula for all values calculated. And now I want to see that whether this graph, which I will put on the same graph sheet. The method is कि मैं इसमें data select करके एक और series का graph बनाऊं, and this series I take x values from here.
I take y values from here. Okay, okay. And you see that जो exact solution है, that has gone exactly over the approximate solution. So we see that two functions that look very different from each other, but has identical graph. मैंने y पर expand भी कर दिया, लेकिन blue line और brown line जो है उनमें कोई फर्क नहीं. Blue line from a Taylor series method and the brown line from the exact solution. So the two very different looking functions are in fact exactly the same functions. And there is some error. I'm not claiming that there is no error. There is some error that can be recognized from values of the function. -1 में मैच कर रहा है 0.1 x equal to 0 पे ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू -1 एग्जैक्टली सेम है. x equal to 0.1 पे भी हमें एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिल रही है, 0.2 पे भी सेम, 0.3 पे जाके थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो 5th डेसिमल प्लेस पे आ रहा है, 0.4 पे फर्क आ रहा है और वो 4th डेसिमल प्लेस पे आ रहा है. तो चूंकि एरर्स इतने स्मॉल हैं जो कि मेरे ग्राफ में नजर नहीं आ रहे, so we do have errors but they are not appearing in the graph. So we can solve wherever हमारे लिए डेरिवेटिव लेना मुश्किल नहीं है, और आमतौर पे डेरिवेटिव लेना मुश्किल नहीं होता. For any differential equation, we can produce Taylor series solution using this method, which is relatively simpler as compared to numerical methods. But we start with numerical method with the easiest one, of course. When we start some class of method, study the class of method, we in fact start with the simplest and then we build upon that. So the simplest of the numerical method for solving an initial value problem is Euler's method. How the Euler's method is developed? Again, we use Taylor's series again. Taylor series, we have been talking about this today. हम अगर इस टेलर सीरीज को, जैसे कि हमने अभी टेलर सीरीज मेथड यूज किया था एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लास्ट टू इनफैक्ट, हम ज़्यादा हायर ऑर्डर तक नहीं गए थे, 4th ऑर्डर तक गए थे या 4th डिग्री तक गए थे. तो मैं एक मेथड डेवलप करने के लिए क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सिंपलेस्ट वुड बी कि मैं फर्स्ट डिग्री तक कंसीडर करूँ, सॉर्ट ऑफ लीनियर अप्रॉक्सीमेशन. इसका मतलब है फर्स्ट डिग्री टर्म के बाद जितनी टर्म्स आ रही हैं उनको इग्नोर कर दूं, and that will constitute the actual error that I leave in my solution. So I have sort of truncated the Taylor series to first degree. उसके बाद मैं थोड़ी नोटेशन चेंज कर दूं, x माइनस एक्स नॉट को मैं h कह दूं, जिसकी वजह से x की वैल्यू x नॉट प्लस h हो जाएगी. x की जगह x नॉट प्लस h आ गया, x नॉट अपनी जगह रहा, x की जगह जब यहाँ x नॉट प्लस h रखोगे तो x नॉट कैंसिल होकर h बचेगा, y प्राइम एट x नॉट. और हमने जो टर्म छोड़ी हैं उनमें सबसे कम ऑर्डर की टर्म जो है वो ये है. तो अगर मैं इस टर्म में x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस h रख दूं तो ये h स्क्वायर की टर्म हो जाएगी. तो यहाँ हमने लिखा है कि वी आर लीविंग error of the order of h square.
Why not h cube or h4 or h5? Because h is small and the largest value amongst all these terms for powers of h will be that of h square. For a small number, h cube will be smaller than h square, much smaller, and h power 4 will be still smaller. So हम जो एरर छोड़ रहे हैं उसको हम कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो एरर इज द ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर. नाउ look at this formula in view of an initial value problem. We have dy by dx is equal to fxy. तो जहां जहां हमें dy by dx चाहिए होगा वहां असल में हम fxy कैलकुलेट कर रहे हैं. y at x naught is equal to y naught is the initial condition. हमारी सब्सक्रिप्ट नोटेशन में अगर x नॉट पे y की वैल्यू y नॉट है तो नेक्स्ट x यानी x नॉट प्लस h पे y की वैल्यू y1 होगी. चुनाची मेरा ये फॉर्मूला जो है जिसमें अब मैं एरर टर्म नहीं लिख रहा, सो इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेट. सो दिस बिकम्स y1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y नॉट प्लस h टाइम्स. अब y प्राइम लिखने के बजाय चूंकि y प्राइम या dy बाई dx जो है एफ एक्स वाई है, तो y प्राइम एट एक्स नॉट की वैल्यू की जगह हम f एट एक्स नॉट वाई नॉट लिखेंगे, क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन जिसके अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेटिव ये फंक्शन है. तो जहां हमें डेरिवेटिव एट एक्स नॉट चाहिए था वहां हम इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट वाई नॉट लिखेंगे. Starting with x naught y naught, we obtain y1 using this formula. Then with x1 and y1 से start करें तो next y की value y1 plus h1 at f evaluated at x1 y1, तो हमें x2 y2 point on the graph of the approximate solution curve मिल जाएगा. और फिर x2 y2 को इस्तेमाल करके इसी फॉर्मूले को हम इंडेक्स आगे बढ़ा दें तो x2 y2 इस्तेमाल करके y3 मिलेगा. दैट मीन्स a point on the graph with coordinates x3 y3, और ये सिलसिला जारी रहेगा. कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी हिम्मत है. लेकिन हम आमतौर पे ये डिसाइड करते हैं फर्स्ट के h क्या है. अगर मैं सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ 0 से 1 तक तो मैंने पहले h इस्तेमाल किया 0.1 टू मेक द ग्राफ. टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन हम कभी 0.1 इस्तेमाल करेंगे, कभी 0.05 इस्तेमाल करेंगे, कभी 0.001 इस्तेमाल करेंगे. मगर जो भी इस्तेमाल करेंगे अगर हमें गिवन है तो वो किस तरह गिवन होगा. द बुक्स यूज दिस नोटेशन. जैसे कि आप लोग फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो इंडेक्स है वो हर दफ़ा चेंज होता है बाय 1. लेकिन अगर आपने फोर्ट्रान देखी हो या स्टेप साइज बेस्ड फॉर लूप देखा हो तो उसमें ये दिया जाता है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू, व्हाट्स द टर्मिनेटिंग वैल्यू एंड व्हाट इज द स्टेप साइज एवरी टाइम दैट यू विल इंक्रीज फॉर द इंडेक्स ऑफ द लूप. तो ये 0, 0.1, 1 का मतलब है कि हमें सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है 0 से 1 तक विद h इज इक्वल टू 0.1. और ये हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है. Let us see how this method, which is given in A, works out. So हम ये एक हमारा मेथड या एल्गोरिथम है हमारा. x not is equal to 0, y not is equal to -1. So dy by dx is equal to, in this problem, minus 2x minus y. इसका मतलब ये है फंक्शन एक्स वाई. तो एफ एक्स एन वाई एन शुड बी माइनस 2xn माइनस वाई एन. जब मैं एक्स नॉट वाई नॉट इस्तेमाल करूंगा तो एफ एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा. जब मैं एक्स वन वाई वन इस्तेमाल करूंगा तो एफ एक्स वन वाई वन आ जाएगा. जब मैं एक्स टू वाई टू इस्तेमाल करूंगा तो एफ एक्स टू वाई टू आ जाएगा, एंड सो ऑन.
और x में स्टेप साइज जो है हम अब बता चुके। चलो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। n इज इक्वल टू 0। अगर n इज इक्वल टू 0 है so I am evaluating y1 is equal to y naught plus h time fx naught y naught. So fx naught y naught, x की जगह 0, y की जगह -1 and fx naught y naught comes out to be 1 which is to be multiplied with h. h हमने 0.1 लिया था तो 1 into 0.1 is 0.1. So h times f की वैल्यू 0.1 आ गई जिसको हम y naught में ऐड करेंगे। y naught was -1. So -1 plus hf 0.1 तो रिजल्ट आया -0.9। इसका मतलब है x1 y1 पॉइंट जो है हमारा वो हो गया 0.1 कामा -0.9। स्टार्टिंग किया था x नॉट y नॉट जबकि x नॉट क्या था 0 और y नॉट -1 था। अब हम x1 y1 निकाल चुके। अब वी गो टू फाइंड आउट y2। तो y1 की वैल्यू -0.9, h की वैल्यू 0.1, fx1 y1 की वैल्यू ये x1 y1 है। सो x1 0.1 y1 -0.9 इस फॉर्मूले में रख दिया। सो -2 times x minus of y and we get 0.7 so that h times fx1 y1 comes out to be 0.07. So h fx1 y1 जो कि 0.07 आ गया उसमें y1 की वैल्यू ऐड की तो y2 की वैल्यू आ गई -0.83. So third point of the solution curve has been obtained. पहला x था 0, दूसरा x था 0.1, तीसरा x है 0.2 और तीसरा y1 जो हमने अभी अभी निकाला। y नॉट था -1, y1 आया -0.9, y2 आया -0.83. In this way, we will keep on finding out new values of x1, y1. ये सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ एक्सेल शीट में लिखे हुए हैं। इस एक्सेल शीट को हम कैसे डेवलप करेंगे मैंने रिजल्ट्स तो लिख दिए, लेकिन आई थिंक इट विल बी बेटर दैट आई रिप्रोड्यूस दिस एक्सेल शीट अगेन। वुड यू लाइक टू सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस और किसी और प्रॉब्लम में मैं आपको करके दिखाऊं? नो रिस्पॉन्स? यस सर। यस सर, कोई ना कोई एक तो बोलेगा ना। अच्छा, बिफोर आई गो टू द एक्सेल शीट, एक तो मुझे चाहिए क्लियरली कि व्हाट इज डेरिवेटिव और फंक्शन एक्स वाई। एक चीज ये चाहिए मुझे। अच्छा, और क्या चाहिए मुझे? पॉसिबली मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। किधर किया था? ये यहाँ किया था और इसका जो एनालिटिकल सॉल्यूशन था वो ये आया था। So let us go to Excel sheet and there I will try to
build a table with the index value, x values, y values, h हम प्रीडिटरमाइन कर लेते हैं कि साहब h क्या है, h इज इक्वल टू 0.01, h चेंज करके भी देखेंगे। फिर हमें चाहिए f एक्स एन वाई एन, फिर हमें चाहिए h स्टार f एक्स एन वाई एन, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाई एन प्लस 1, that will be obtained by y n plus h star f x n y n। so हमने ये कॉलम्स बना लिए अपने कंप्यूटेशन के लिए। x naught y naught, the x naught y naught values were 0 and minus 1। function value calculate करनी है and this is the function, so is equal to minus 2 times x value, which is coming from cell number g what, g6, minus yn, and that is coming from h6. Now we have decided that h is equal to 1, so 0.01, तो या तो आप सेल रेफरेंस दें या इसको हार्ड कोड कर दें। स्टार एफ एक्स एन वाई एन की वैल्यू हमारे सेल I6 में है, मल्टीप्लाई कर, और नई y वैल्यू निकालने के लिए हमने ये वैल्यू फॉर्मूला इस्तेमाल करा है जिसमें पहले y वैल्यू है। y वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम h6 plus h times f is coming from j6, and that gives you the new y value. Now y value that will be obtained by exact solution, वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, is equal to 2 minus 2 times x, and x is coming from c6. Somebody is saying something? If not, please switch off your mic. So we were writing down the exact solution value. 2 minus 2x minus 3 star exp minus g6. So the this exact solution is at x naught, so y naught is reproduced. Next iteration, and that will have index value 1, तो हम f6 में 1 ऐड कर दें और हमारे तमाम इंडाइसेस जो हैं वो इस कॉलम में आ रहे हैं। हमने जाना है 10 तक, तो यहाँ पे हम x वैल्यू डाल दें कि हमारा h.1 है, तो न्यू x वैल्यू विल बी g6 plus 0.1, and we see that ये 0.9 तक आया और ये 1 तक पहुंच गया। Now where is, now this is x naught y naught, this is x1, where is y1? Y1 is calculated in this column, so copy this value here is equal to k6. What I do now is just ये सारे जो सेल्स हैं इनमें फॉर्मूले हैं, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो अगली एक्सप्रेशन होगी। अब मेरे पास सारे सेल्स जो हैं वो फॉर्मूलों से फीड लें और मैं पूरा सोल्यूशन यूँ प्रोड्यूस कर। Now let us look at the solution. ये
हमारा numerical solution है. And we make a graph of this. Now on this graph, which is representing the numerical solution for these x and yn values. इसी ग्राफ पे let me plot ये x values और ये y values जो exact solution से आए. And let us see हमें कोई फर्क नजर आता है कि नहीं नजर आता. So we select data, adding series to this graph, taking x values from here. But y values from here. So exact solution curve has been obtained. And here you can see that the brown series is the exact solution curve, whereas the blue series is the numerical curve. They match at the initial value, but then they have a difference that is developing, that is increasing every step. What is the increase? And we can check for the absolute error between actual y values and the numerical y values. So they are coming from M6 minus H6. This will be 0 because at initial point the two solutions match. But that is not the case for the rest of the points. So we have some error. Now see, what's the size of the error? The size of the error is 10 to the power minus 2. The h was what? H was 0.1, that is 10 to the power minus 1. So errors are of the order of 10 to the power minus 2, that is h square. So that completes the demonstration of the same problem. Redone. वही ग्राफ है, and we can improve just as for any other method, numerical method, to obtain an approximate solution for any given mathematical problem. हमारी कोशिश ये होती है कि हम एरर को डिक्रीज करें. हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम में एरर था h स्क्वायर विच इज डिपेंडेंट h सेलेक्टेड. h अगर 0.1 है तो एरर जो है 0.01 के ऑर्डर का. हालांकि तुमने देखा कि वहाँ एरर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा भी हैं, 0.1 से ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ h स्क्वायर बिकॉज h स्क्वायर इज sort of 10 to the power minus 2 values. 3, 4, 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे. बट अगर मुझे एरर डिक्रीज करना है तो मुझे h को डिक्रीज करना है क्योंकि एरर h पे डिपेंड कर रहा है. अगर मैं h 0.001 ले लूं तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कम हो जाएगा. इस डिफरेंस को देखने के लिए if you are working entirely on Excel sheets, what you can do is that here, for example, मैं यहाँ 0.01 कर देता हूँ and produce the solution only up to 0.1. मगर ये h मेरे पास यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा मुझे. And look at the graph now. 0 से 0.1. Graph is hardly any different. मगर हमने तो 1/10 solution प्रोड्यूस किया. इसके बाद जो है वो प्रोड्यूस करना है तो instead of 11 values we will have to find out 101 values. So we are working in an Excel sheet, we can easily do that.
ग्राफ को एक तरफ कर दें, चल भाई तरफ जा यार. Let me get more access and shrink the graph. And then produce more points. Working with Excel sheet or working in a computer language, ये देखो 0.53 तक पहुंचा, 7 points, 0.76 तक पहुंचा, 0.9 तक पहुंचा. Keep an eye on the error column. ये जो error column है, this time the error is of the order of h square. मगर अगर मैं दोनों ग्राफ दोबारा प्लॉट करूं तो well, I leave this exercise for you. मैं ये एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है. तो ये एरर कॉलम शो कर रहा है कि मेरे पास न्यूमेरिकल solution value for y and exact solution value for y are correct up to one decimal place, second decimal पे error आ रही है. तो मेरे ग्राफ में it will be hardly visible. So I leave making the graph of these 100 plus points to you. I hope you can do that. Let us proceed further. अच्छा, ये 0.05 के लिए मैंने ये किया हुआ है, यही प्रॉब्लम, और इसका ग्राफ भी दिखाया हुआ है. So 0.5 के लिए, do I have an error column? No, I don't. Yes, there is an error column. This is the error column. And the error is smaller because h has been taken smaller, so error has to be smaller. Previously, these two graphs were far apart, but now they have come closer. So one method, one tool of increasing the accuracy of the solution is that you decrease h and do more work. जाहिर है, यानी आपको जिंदगी की किसी आम प्रॉब्लम में भी बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए you have to work more, you have to work harder. So to get a better solution, more accurate solution, you have to work more, work harder. If you are increasing, decreasing h value, you have to calculate more points. Manually, it will be really hard work, but working on Excel sheet is just copy drag sort of iterations, and it takes no time. But then to make the graph, you have to make a little more effort selecting the data. The other method that can be used for developing the graph, developing a more accurate solution, is to go for a method that is of higher order. What was the order of my Euler's method that we just have gone through? That was the first order linear approximation method, because we terminated the Taylor series to first degree term only, and the error was of the order of h square. So to increase the accuracy of the results, you have to go for higher order approximation. How we go for the higher order approximation in a method called modified Euler's method is not exactly same as previously. Directly, I take the Taylor series, truncate it after second degree term,
and develop a method. It's a slightly different approach. This approach is known as the name of a larger class of method, a predictor corrector method, in which first we make an estimate of the new value of y, and then using some method we improve upon that value of y. This large class of predictive corrector method इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर amongst common researchers जो data analytics करते हैं. Amongst them, the method is fourth order method that was developed by the German mathematicians Rung Katta, जिसको हम उर्दू में पढ़ते हैं, रवानी में रंगे कुत्ता के पढ़ देते हैं. And it doesn't sound nice, so it's very popular that we call them RK methods. So amongst the RK methods, the fourth order is very popular. And this method that we are going to study under the heading of modified Euler's method is only a second order RK method. How it works, we describe it here in step 5. Sort of an algorithm is being described for implementing this modified Euler's method. Of course, we have to find a solution of an initial value problem of the same type. And we start with x naught, y naught as being the first point of the solution. And then we produce x naught plus h comma y1 using one step of the Euler's method, which we studied before this. But this time, instead of calling the new value as y1 and one iteration completed, no, we call it y1 comma p, and p stands for predicted value. So here, a value of y produced using simple Euler's method is called the predicted value. जहाँ पे fx naught y naught was the derivative value at x naught. So we go for calculating fx1 y1p, which is yet another value of the derivative, not at x naught, but at x1. But that is not what we are going to stop at, and we go for a correction. Correction in what? Correction in the value of y1 obtained using one step on Euler's method. So we use what? Another step of Euler's method, y naught plus h multiplied by पहले हमने सिर्फ डेरिवेटिव वैल्यू ली थी, अब हमारे पास एक डेरिवेटिव वैल्यू एट एक्स नॉट अवेलेबल है और एक डेरिवेटिव वैल्यू एट x1 available है, where y is a predicted value. So what we do in this step is that to have a corrected value of y naught में एक दफा फिर कुछ ऐड करें, and that is h times the average value of y prime at x naught and average value and y prime at x1, whereas y prime at x1 is evaluated using function of xy, in which we substitute x1, that is x naught plus h, and y predicted. इन दोनों का एवरेज जो है उसको h से मल्टीप्लाई करें, and that gives us the corrected value of y, and that is our one iteration completed. Starting from x naught y naught, we produce now x1 y1, where x1 is x naught plus h, but y1 has been double evaluated. First a predicted value, then a corrected value, and the corrected value takes the place of y1 actually. So what we do to produce the new point, we follow exactly the same steps,
to produce the next point, which is x2 plus x0 plus 2h y2 or x2 y2. हम x1 y1 पर सिंपल यूलर्स मेथड का एक स्टेप इस्तेमाल करके y2 प्रेडिक्टेड कैलकुलेट करेंगे and then write down fx1 y1 as derivative value at x1 y1. Then we compute function value at x2 y2 predicted, and that we call derivative value at x2 y2, or simply uh, derivative value, second derivative value. Finally, compute the corrected value of y, and that involves this step. This is the additional step. Here, y naught plus h times average values of y naught prime and y1 prime. Here, to to develop a corrected value of y1 plus h times average values of y1, y prime 1 and y2, y prime 2 calculated here. So that gives us the next point on the solution curve, approximate solution curve. We keep on revising, iterating like this every time and develop the solution. Yes, it is a bit complicated, but if we do it on Excel sheet, I will prefer that whenever we have to, we use Excel sheet, and what we need to calculate in the table of results that we produce through Excel sheet. N stands for the iteration number. First iteration is corresponding to x naught, y naught. That will ultimately produce a y1 corrected value. In the meantime, h times y prime at x1, y1 predicted. No, it's not. It's h times यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये y प्राइम, हाँ यस y प्राइम लिखें इसको, या एफ एक्स एन वाई एन लिखें, दैट स्टैंड्स फॉर y प्राइम. तो ये एफ एक्स एन की वैल्यू, एफ एक्स वाई की वैल्यू है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय h added to y1 gives you y1p, and then h times derivative value or f at xn, next n plus 1, and y n plus 1 corrected. इन दोनों की एवरेज वैल्यूज कौन कौन सी, y प्राइम और h प्राइम की, या h टाइम्स y प्राइम y prime n plus 1 की average value, and then we go for corrected. Of course, here it is not very clear to understand, but following these steps in letter and spirit will make you understand the whole process more easily. So I don't have enough time that I can build an Excel sheet, but let us try. Let us try. कि मैं उसमें क्या क्या कैलकुलेट करूँगा. So I change the sheet. I will keep track of the index currently used. I will keep track of xn. I'll keep track of yn. Then what I need to calculate is to make steps under control. बहुत ज़्यादा columns ना बनाएं. H times yx f at xn yn. That will be then used to find yn plus 1, predicted, calculated using
y n plus h times y prime at x n y n कॉलम बड़ा हो गया. I want to describe the complete step. Okay, once this predicted value is calculated, we go for calculation of हाँ, ये जो y प्राइम मैंने लिखा है, इस y प्राइम की जगह मैं सॉरी ये f नहीं था, ये h इसकी जगह f, क्योंकि fxy is y prime. Once I've done that, I have to calculate h times f at x n plus 1 comma y n plus 1 predicted. Of course, I'm trying to emulate. I'm trying to copy the steps of algorithm that I discussed. अब मेरे पास जो फाइनल स्टेप है जिसमें कि मैं y n plus 1 करेक्टेड कैलकुलेट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है y n प्लस h टाइम्स y prime 1 comma not comma plus y prime 2 divided by 2. ये तो वो स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं. x starting with some xy, we have to calculate function value at y multiplied by h. We calculate a predicted value using this. Then calculate h times the derivative value or the function value at xn plus 1 and yn plus 1 predicted. So where do you have yn plus 1 predicted? In column I. So if I make a rough calculation, मेरे पास प्रॉब्लम वही है, मैं उसी उन्हीं पॉइंट से चलता हूँ. मेरे पास डेरिवेटिव. अच्छा, बात ये है कि मुझे यहाँ तो h इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मगर यहाँ h लिखना ज़रूरी नहीं है. अगर मैंने h यहाँ लिख दी, h मल्टीप्लाई लिख दिया है, तो फिर यहाँ पर मुझे सिर्फ ये yn में h में कैलकुलेटेड वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी. इज इक्वल टू 0.1 स्टार what was fx and yn minus 2 star x, that is f3 minus y, wasn't it? This column, yes, minus y था वो, so is equal to 0.1 star minus 2 times x f3 minus g3. So जो कुछ हमने यहाँ लिखा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया. The predicted value of y is to be calculated using what? Available value of y plus h times this जो already calculated है.
तो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो H3 में मौजूद है, ये हमने। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, H स्टार। Now what is H? 0.1 star. Function value at xn plus 1. What is xn plus 1? Xn plus 1, when xn is 0, xn plus 1 is going to be 0.1. Function value at 0.1, so minus 2 times 0.1 minus y predicted, and the y predicted is available from I3. And then मुझे इस वैल्यू और इस वैल्यू का एवरेज ऐड करना है। इसमें भी h मल्टीप्लाइड है, इसमें भी h मल्टीप्लाइड है। सो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और ऐड करना है yn में। सो इज इक्वल टू yn, and yn is g3 plus the average of h3 and j3 divided by 2. Let us see whether we have the same result as the calculation shown here, minus corrected value of phi, minus 0.915. Minus 0.915. So what I suggest, कि एक दफा किसी जो भी प्रॉब्लम यहाँ कर रहे हैं, जैसे ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम पे ये 2 आइट्रेशंस, ये वाली 1 आइट्रेशन और सेकेंड आइट्रेशन, इन दोनों को फॉलो करके मैनुअली काम करो। एक दफा मैनुअली कर लो, उसके बाद फिर एक्सेल पे चले जाना। 2 आइट्रेशंस मैनुअली करना, उसके बाद जो मैंने ये टेबल डेवलप की है और जो तुम्हें डेवलप करके दिखाने की कोशिश की है, I think I'll revise this because this is the first method, which is a bit tricky for finding approximate solutions of differential equations or initial value problem. I stop recording here. मैंने थोड़ा टाइम आज ज़्यादा ले लिया है और